So the next question in this 30 days of code is interfaces. Okay, this question is means वो interface के बारे में बताना चाहते हैं using this question. Okay, so here they are giving an input and they are printing like this. Okay, so the integer 6 is evenly divisible by 1 2 3 and 6. Our divisor sum method should, okay, तो जो भी डिविजर्स है उसको एडिशन उसका एडिशन करके उसका सम हमें रिटर्न करना है लाइक दैट. ओके, तो डिविजर्स में 1 भी आएगा और 6 भी आएगा. ओके, दैट्स द थिंग. ओके, सो हियर वी आर गेटिंग दिस इन जावा. अगर आपने कोड देखा होगा मीन्स इंटरफेस करता क्या है. इफ़ यू नो अबाउट द इंटरफेस theoretically मीन्स इन द इंटरफेस all the functions are just declared. उसका एक्चुअल में डेफिनेशन जो क्लास उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाला होता है उस क्लास में उस फंक्शन को कंप्लीट करना पड़ता है लाइक दैट. हियर दे हैव डिक्लेयर्ड द फंक्शन डिविजर सम बट they are defining that function in this class because this class is implementing this interface advanced arithmetic. Okay, so here they have created an object of my calculator, but here they are referencing to the advanced arithmetic. Okay, so they are referencing to this. That's why here they have written the system.println जो हमें इधर प्रिंट करके दिखाई दे रहा था. I implemented and that interface name. Okay, so उस interface के name के लिए this is the function. Okay, my calculator dot get class dot get interface dot zeroth condition dot get means zeroth position dot get name. That's the thing. Okay, and lastly here they have calculated the sum, that is they are calling divisor sum and they want to print the things. Okay, so we will now write the right code here. For that I will create a sum is equal to 0 and here I will iterate a loop for int I is equal to 1 because I want to iterate from 1 is less than or equal to n I plus plus. Okay, if our I is divisible to that n मीन्स अगर हमारे n मॉड्यूलो I इज इक्वल टू 0 होगा तो हमें क्या करना है, तो हमें सम में ऐड करना है. दैट इज सम इज इक्वल टू सम प्लस I and lastly we want to return that sum here. Okay, so ये वाला तो बेसिक लॉजिक हुआ. To find the sum of factors, I think it should work. So the basic concept is that the interface. Okay, so thank you.